So we have actually the process known as alcoholic fermentation. अच्छी तरह से इसको जान लीजिए. Alcoholic fermentation is the process. We have alcoholic fermentation. So in this process now, look at in the process number first, I told you the when you use the lactobacillus in the culture, lactobacillus can convert the pyruvic acid into lactic acid. So lactobacillus, in case of the fermentation called as the lactic acid fermentation, so pyruvate is converted into lactic acid because the lactic acid bacteria, Lactobacillus acidophilus, they possess an enzyme known as this enzyme called lactate dehydrogenase that brings about the conversion of the pyruvic acid to lactic acid, final end product. But now this time I am talking about alcoholic fermentation, and here we have an organism about it called a yeast. This time in the culture, you do not have the bacteria. You have a very, very important yeast, which is known as Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is the commonly known as baker's yeast or brewer's yeast. So we call it as a baker's yeast or brewer's yeast. Look at finally. This time I'm talking something different. We are taking this time an organism from the fungi, fungal world, and we call this phenomenon as alcoholic fermentation. And here we have actually yeast known as Saccharomyces, also called as a baker's yeast, also referred as the brewer's yeast. So, this is having a use in the baking and also in brewing. That means it's having a use in making bread and brewing, alcohol, ethanol. And how it happens, look at this thing. So we have, again, I would like to tell you, we have a glucose, and then we have glucose 6-phosphate. Then we have fructose 6-phosphate. Now we have glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, DHAP, and glyceraldehyde 3-phosphate. And here the DHAP is converted into glyceraldehyde 3-phosphate again by TPI, and glyceraldehyde 3-phosphate is converted, and here we are having NAD positive and reduced to NADH plus H positive by providing inorganic phosphate, and it's converted into 1,3-bisphosphoglycerate, and then it's converted into 3-phosphoglycerate, then it's converted into 2-phosphoglycerate, then it's converted into phosphoenol pyruvate, and then it is converted into, you can understand, a chemical we have here, CH3, C double bond O, COO negative, which is called as pyruvate. And what happens to this pyruvate? Look at this thing, this pyruvate. Again, I would like to draw here. This pyruvate is the chemical. During the formation of the ethanol, we have two steps. Step number one, using the Saccharomyces cerevisiae, also the baker's yeast or brewer's yeast. Step number one in ethanol, look at number one, CH3, C double bond O, C double bond O negative. This chemical, it undergoes a decarboxylation. See, this is, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल गया. अब क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप था तो इसका H पॉजिटिव वापस लाओ. ये H पॉजिटिव जो है वो इस कार्बन पे जाएगा. अब अच्छी तरह से देखिए, यहां पर हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि COOH, हम लिखते हैं इसको COA नेगेटिव, लेकिन असल में COH. और जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, देखिए डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, तो एंजाइम जो यहां पर होगा उस एंजाइम का नाम पड़ेगा पाइरुवेट decarboxylase.
We call it as a pyruvate decarboxylase. It brings about the decarbozylation, and hydrogen from the carboxylic group, or we can say that this proton is shifted to this carbon, and it gets converted into C double bond OH and CH3, which is called as, so this is called as a pyruvic acid, and this is called a acetaldehyde. This is the chemical which is known as acetaldehyde. And so the step number one, what happens, the pyruvic acid is decarboxylated because of a special chemical known as the pyruvate decarboxylase that brings about the decarboxylation, removal of carbon dioxide or removal of the carboxylic group. And what happens, this gets finally converted into a chemical known as acetaldehyde. And in the step number two, what happens to this acetaldehyde, CH3, C double bond OH, we have an acetaldehyde now, plus, you see this acetaldehyde, you provide now to this acetaldehyde NADH plus H positive. So we have again two hydrogens here, and this gets oxidized to NAD positive. Look at this thing. So that means this chemical NADH has been oxidized back to NAD positive, whereas these two hydrogens, they are pumped into pyruvate. So, and they get converted into, they convert the pyruvic acid gets converted into C, okay, write down H, CH3, CH, and we get the two hydrogens here, OH and H. And this is the chemical, this chemical is known as acetaldehyde, and this chemical is known as ethanol. So this is meth, eth, and all. So this is actually ethanol, and this ethanol is actually अल्कोहल. तो इसी को शराब का नाम दिया जाता है, अल्कोहल. तो अल्कोहल कैसे बनाते हैं, मैं दो स्टेप्स आपको एक स्टेप वापस ले जाता हूं. अब देखिए, पायरुविक एसिड बनने के बाद आपके कल्चर में जब सैक्रोमाइसिस सर्विस यानी कि ब्रूअर्स यीस्ट या बेकर्स यीस्ट जब मौजूद होगा, तो पायरुविक एसिड से सबसे पहला स्टेप जो होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा बिकॉज ऑफ decarboxylation, and the enzyme that catalyzes this reaction is the pyruvate decarboxylase, and it gets converted into acetaldehyde. And then जो आपके पास ऊपर बायोकेमिकल मैकेनिज्म में एक NADH ऑलरेडी बना हुआ है, ये देखें NADH आपके पास है, तो इसने अपने दो हाइड्रोजन इसको देने हैं, इस वाले कार्बन पे देने हैं, और ये बनता है एक केमिकल, जिस केमिकल का नाम है इथेनॉल, और ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. और यहां पर जो एंजाइम काम में आता है, इस केमिकल का नाम है alcoholic dehydrogenase या ethanolic dehydrogenase. तो इथेनॉल ही शराब होती है, और इसी को बनाने में यीस्ट का काम होता है. तो यीस्ट को अगर आप किसी भी शुगर के कंपाउंड केमिकल में रखेंगे, तो वो वहां से फाइनली इथेनॉल बना लेगा. तो फिर जो है शराब की डिफरेंट किस्में होती है, यहाँ हमें उनको नहीं, हमें बायोकेमिकल मैकेनिज्म देखना है. तो यहाँ पर आपने देखा कि जितने भी, अब आपने देखा जितने भी एनारोबिक मैकेनिज्म्स होते हैं, इनमें जो एटीपी बजेटिंग आप देखते हैं, इनमें कितने एटीपी बन जाते हैं अंडरस्टैंड करेंगे. आपने पहले ग्लाइकोलिसिस में एटीपी कितने दे दिए, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है आपने स्पेंड किए, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहां स्पेंड हो गए, स्पेंडिंग 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, और 4 एटीपी मॉलिक्यूल जो है जेनरेट होते हैं, चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो. और जो नेट यील्ड है यानी कि नेट गेन जो है, वो है 4 एटीपी में से 2 एटीपी जब आपने माइनस किए, तो वहां 2 एटीपी बच गए.
तो ये हमारे पास है एनारोबिक रेस्पिरेशन का हिसाब। जो हमारे पास NADH प्लस H पॉजिटिव था वो वापस ऑक्सीडाइज हो गया NAD पॉजिटिव में। सो क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं NADH प्लस H पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइज बैक होता है NAD पॉजिटिव में। इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको याद रखना है net gain of ATP molecules is only 2 ATP molecules. 2 ATP molecules are, net gain, 4 are generated and 2 are formed. So 4 ATP molecules are generated and 2 are used. So 4 minus 2 ATP molecules is called 2 ATP molecules and NADH is oxidized back to NAD positive. तो इससे हमारे पास जो है anaerobic respiration का जो है प्रोसेस जो है खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। ये हमारे पास जो है होगा। We have one important question in our mind. So why we call this as a brewers? We call it a brewers yeast because it's used for the alcoholic manufacture of alcohol. All the types of the alcohols are manufactured. जो ethanol हमारे पास होता है इसको manufacture किया जाता है with the help of the Saccharomyces cerevisiae. So why it's called a baker's yeast? तो इस स्टेप पे आप देख लीजिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जब आपने यीस्ट को किसी आटे में डाल दिया है, चाहे आप वो ब्रेड बना रहे हो, अगर आप ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड में आपने यीस्ट मिलाया, उसके साथ शुगर मिलाया, और जब आप उसको हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि वहां से प्रोसेस शुरू हो जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्रेड को रेज कराता है। सो दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेजिंग ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड बेकिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना बहुत ही अहम होता है। तो यीस्ट जो रिएक्शन कराता है, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस है, आप देखेंगे ब्रेड से गुजरता है तो वो ब्रेड पोरस बन जाता है, यानी उसमें जो है ब्रेड जो है रेज हो जाता है, और उसी वजह से का जो है वहां पर ब्रेड का जो बनना होता है। ब्रेड आप देखते हैं तो ब्रेड जो है ये सैक्रोमाइसिस सर्विस है, ब्रेड बनाने में भी काम आता है, और सैक्रोमाइसिस सर्विस है जो अल्कोहल बनाने के काम में भी आता है। तो स्टेप 1 में आपने देखा कि पायरुविक एसिड जब इथेनॉल में एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल आता है, तो इसके दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस बाहर आता है उससे जो है ब्रेड रेज हो जाता है। उसके बाद जो फाइनली एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट होता है इथेनॉल में, तो उससे अल्कोहल मैन्युफैक्चर होता है। तो इसके साथ जो है हमारा प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन खत्म होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम पायरुविक एसिड का फेट देखेंगे, स्टेप नंबर 2 पढ़ेंगे हम।